Good morning. I am Anil Agrawal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, new notification of IBPS PO came. Prior to this, the new notification of IBPS Clerk came. Now, in IBPS PO notification, vacancies are much higher than preceding years, and it is above 6,432. Now, some candidates, those are in reserve list of PO and clerk, they are worried. Some of them requested through the comment, sir, clarify the position, what is our fate? If banks have opted for so much of vacancies for new selection, will they take us or not? What is our hope? Now, first thing is, whenever some news comes, I don't know from where some panic unnecessarily set in. If something good is happening, still people are not happy. Some people have developed the habit of unhappiness. Rather than to appreciate that there are large vacancies in the upcoming selection, some people are unduly worried. Both the vacancies are unrelated. The people, those are in reserve list, they are out of reserve list for the vacancies of financial year 2022-23, and the current notification is for vacancies of 2023-24. So there is no contradiction in this. Now say one bank requires staff in the month of October, so they will not get staff from 2023-24 notification because result will come on 1st April. So if they require staff in the month of October, they will send their requisition to IBPS, sir, we need this much of staff. So out of reserve list, they will be allocated. Since this year more than one reserve list is to come, so there is a good chances of reserve list candidates that they will get good chance of selection this year, unlike last year. Because last year reserve list release and the new result date are only with a gap of 1 day. So banks were using either of the option, either to go for reserve list or to go for fresh candidates, because both the joinings are to happen around very close to each other. Now this year's situation is different. So if a bank require urgent staff during the current financial year, they have no option but to take from the reserve list. So this year formula is a much favorable formula to the reserve list candidate. Higher vacancy next year does not affect their fate. The calculation of vacancy for next year is done independently. The current year requirement will be done separately. So if there is a need of staff, they will definitely report to IBPS, and IBPS will come out with the reserve list. Now the question arises when? This is another question. When IBPS will release the reserve list? They have not given any time frame. They have simply said it can be 3 to 4. So depending upon the requisition and intent from respective banks, IBPS may come out with allocation under reserve list. So my advice is, don't get into panic due to allocation of good vacancies in some other notification. That will only give you can say, unhappiness, nothing more than that. You are placed in reserve list, you have to wait, no other option. But at the same time, you cannot sit idle in hope of reserve list. Reserve list is just like a lottery. It may click, it may not click. You have to always appear in future exams till you get the appointment letter. So even if you are in reserve list, even if you are very close to the reserve list, the sincere advice is always prepare for future examination. You may get the employment, you may not get the employment. That should be very clear, crystal clear in your mind. But don't get unhappy by seeing large vacancy in future year. If there are large vacancy in future year,
that is good for you because there may be good vacancy in the current year also and you may get the chance under reserve list. This is my advice, and as soon as I get more concrete data I will share with you. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। कल IBPS PO का नोटिफिकेशन आया, सब लोग खुश हैं, बहुत वैकेंसीज हैं, और जैसा मैं बता रहा था लगातार आपको चैनल पे वो सब सच निकला। इसी तरह IBPS क्लर्क में भी वैकेंसीज बढ़ के काफ़ी हो जाएंगी। मैंने पहले ही आपको बताया, मेरा अनुमान है 13,000 से अधिक हो जाएंगी। तो दोनों में अच्छी वैकेंसीज हैं। अब होता क्या है, कहीं पे अच्छी खबर आती है, पता नहीं कौन लोग हैं जो बेमतलब कुछ लोगों के अंदर टेंशन डालना शुरू कर देते हैं, और उसमें से एक टेंस हो गया ग्रुप, वो है रिजर्व लिस्ट वाला। किसी ने उनको ये कहना शुरू कर दिया कि ये यहाँ वैकेंसी ज़्यादा चली गई, अब आपका चांस ख़त्म हो गया। ऐसा कैसे होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। आप प्रोसेस को समझिए। जो करंट वैकेंसीज आई हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 1 अप्रैल को तो उसका रिजल्ट आएगा। दैट मीन्स ये वैकेंसी उन सीटों को भरी जाएंगी जो बैंकों में 2023-24 में खाली होनी है या क्रिएट होनी है। और जो आप रिजर्व लिस्ट के लोग हो वो 2022-23 सिलेक्शन के लोग हो। आप मान लीजिए किसी बैंक को अक्टूबर में स्टाफ चाहिए, तो उसके पास तो एक ही ऑप्शन है ना, रिजर्व लिस्ट से ले। तो वो IBPS को लिखेगा मुझे स्टाफ चाहिए, IBPS उसमें से दे देगा। तो जब एक ही रिजर्व लिस्ट आती थी तब तो बैंक के पास चॉइस थी कि मैं रिजर्व से ले लूँ या मेन से ले लूँ। अब तो रिजर्व लिस्ट यूज होगी, अगर साल के दौरान स्टाफ चाहिए तो वो लोग रिजर्व लिस्ट को ऑप्ट करेंगे, और साल के बाद चाहिए तो रिजर्व लिस्ट से भी ऑप्ट कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्व लिस्ट 31 मार्च तक वैलिड है। तो आपको तो फायदा ही हुआ है नए सिस्टम से, नुकसान नहीं हुआ है। जो लोग रिजर्व लिस्ट में हैं उनको तो फायदा ही हुआ है। मान लीजिए ए बैंक को अचानक अक्टूबर में स्टाफ की ज़रूरत है, तो वो वेट थोड़ा ना करेगा 1 अप्रैल के रिजल्ट की। वो IBPS को लिखेगा मुझे स्टाफ दे दीजिए, वो रिजर्व लिस्ट में से उसको दे देंगे। अब दूसरा प्रश्न ये आता है, रिजर्व लिस्ट आएगी कब? ये IBPS ने कोई डिफाइंड डेट्स नहीं दी हैं, क्योंकि रिजर्व लिस्ट का रिलीज इस बात पे डिपेंड करेगा उनके पास कब इंडेंट आता है। तो जब बैंक इंडेंट करेंगे तभी तो वो अलॉट करेंगे। इसीलिए उन्होंने सिर्फ ब्रॉडर गाइडलाइंस दी हैं कि 3 से 4 बार आ सकता है। तो अब अगले 6 महीने के अंदर, क्योंकि अगस्त आ गया आपका, 4 महीने निकल गए, तो अगले 8 महीने के अंदर आप ये समझिए आपकी 3 से 4 रिजर्व लिस्ट की एलोकेशन होनी है। तो बहुत अच्छा चांस है। तो निराश मत होइए। देखो, कोई भी खबर आती है ना, उसमें खुशी मनाया करो, परेशान मत हुआ करो, पहली चीज़। दूसरा, अगर आप रिजर्व लिस्ट में हैं तो आप मान के चलिए कि रिजर्व लिस्ट एलोकेशन का मतलब है लॉटरी लगना, कोई गारंटी नहीं है आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है? तो अगर आप मन में ये बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। अगर आप रिजर्व लिस्ट में हैं, आपको अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अगले एग्ज़ाम को तब तक देते रहना है जब तक आपको रिजर्व लिस्ट के जरिए अपॉइंटमेंट लेटर ना मिल जाए। इसलिए मेरली आप रिजर्व लिस्ट में आए, इसलिए आप निश्चिंत होकर बैठ जाएं, फर्दर तैयारी छोड़ दें, ये आपके लिए सही नहीं है। रिजर्व लिस्ट में आपको नौकरी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। अगर आप ये लेकर चलेंगे आप खुश रहेंगे, मगर दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। बेकार आप परेशान मत होइए, वहाँ वैकेंसी ज़्यादा आ गई तो मेरा चांस मारा गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका चांस 2022-23 में अगर कोई वैकेंसी अराइज होती है और उस बैंक को एमरजेंट रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की, तो ही रिजर्व लिस्ट से जाएंगे। और जिस तरह की ज्वाइनिंग्स हुई है इस साल, काफ़ी कम ज्वाइनिंग है, काफ़ी बैंकों में वैकेंसीज खाली रह गई हैं, तो उससे आपकी संभावना काफ़ी अच्छी है। मगर इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं कोई, आप जब तक कंक्रीट डेटा नहीं होगा कैसे बोलेंगे। तो आप अपनी तैयारी करते रहें और ये भी ईश्वर से प्रार्थना करते रहें कि ये लॉटरी आपकी लग जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।